Hello everyone, welcome to the session and I welcome all of you to my channel Aptitude Club. This is the Reminders series that you are watching and this is the fifth session of the Reminders series. If you are new to the channel and you haven't watched the previous sessions, I would request go to the playlist section and you will find the entire playlist of the Reminders section. तो पूरा Reminders का playlist है. Okay, I'll also share the link of the playlist in the description of the video. You can check that and do watch the previous sessions. Session number 1 से लेके 4 तक. I'll mention the links of the session in the description as well as in the I section of the video. So do watch them to get an overall idea of how reminders work. And every session in the beginning, I explain the relevance of the topic. This basically is from the numbers section, and numbers usually people find it a little tough, although it's a fundamental topic, but still because of the diversity of the questions, so that is why people find this section a little bit challenging, and a lot of people in general skip this area. My suggestion would be don't, and ऐसा नहीं कि मैं ये session ले रहा हूँ, that is why I'm saying this that you have to read this. Totally not. If you look at the overall design of the exam, it ends up at one point, that is selection of questions. So the person who selects the right questions and easily gets to solve 10-14 questions, उसका अच्छा percentile आ जाता है. So if that is the game, what should be my approach? Approach is read only what I like and then solve whatever comes from that chapter. Or second option is read everything and solve whatever is easy in the exam. So second option is always better, because in that way you are actually approaching the exam in a very rational manner. First approach is dangerous, because if I have only read what I like and then whatever questions come from that chapter, I'll try my best to solve them. What if those are difficult questions? So that reduces my chances. I'm not saying you cannot score. Mathematically it is possible. That numbers देखोगे तो यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन, वहाँ पे भी 10 क्वेश्चन, but the second approach will help you reach 10 questions, maybe 15 questions also, much easily as compared to the first chapter. So that is why it is very crucial for us to read all chapters equally. Okay, and that is the reason what I thought of is, rather than taking the entire numbers and then loading you with so much of information, I have broken numbers into few sections. So reminders is one part of it. So reminders हालांकि question एक दो ही आता है, but the good thing about reminders is once you understand it properly, you will not take more than 30 seconds 1 minute to solve any question, because exam में काफी easier side में आते हैं reminders के question, and very conveniently you can solve it in less than a minute. So if that is the case, maybe while reading I'll have to read a little bit about the theorems, maybe practice some questions, 100 questions के आसपास करना पड़ेगा. थोड़ा टफ वहां पे लग सकता है, but that's a one time effort. Once you get the understanding of the topic, next time you see such a question in the paper, you will find it very easy to solve. And सोचो तुम्हारे पास एक guaranteed area है जहां से तुम एक question या दो question जो भी आएगा तुम कर ही सकते हो. So nothing better than that. Okay, so that is the overall context of starting this reminders ka playlist. After this numbers ka दूसरा section I'll take, that is factors theory. Factor theory ka playlist वहाँ पे we'll understand entire factor theory. That is again a very conceptual and important topic. Similarly, all other area sections of quants I'll take in playlist. So जो भी पहला session कोई भी playlist का, if you are watching it from the middle, so please watch it from the beginning. You'll find it very easy to understand. I have taken very simple basic examples to make you understand. So do watch the previous sessions, and if you like the videos, do subscribe to the Aptitude Club channel to find more and more content related to the CAT preparation and other management and test ka preparation as well. So once again, thank you all for joining in the video and welcome you all to the session. So let us get started with today's session, that is Wilson's remainder theorem. So far we have discussed basic remainder theorem, Fermat's little theorem, Euler's remainder theorem, and concept of negative remainders, remainders on continuous digits. So these 5 concepts we have covered. आज पढ़ेंगे Wilson's remainder theorem. Now Wilson's remainder theorem is based on factorial, the concept of factorial. So what is factorial, पहले मैं वो define कर लेता हूँ. Factorial is the product, suppose I am writing n factorial. N factorial is defined as the product of the first n natural numbers. Product of the first n natural numbers. This is how you can define a factorial.
product of the first 10 natural numbers. For example, I'll write 6 factorial. So it is 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6. 1 से लेके 6 तक का product. If I'm writing 8 factorial, तो 1 से लेके 8 तक का product. Simple meaning of factorial. I'm not indulging more on factorial. That's a different topic to understand. But अभी के लिए just to understand the theorem. Those of you who don't know what factorial is, उनके लिए बता रहा हूँ. बहुत लोगों को already factorial का meaning पता होगा. N factorial, NPR, NCR ये सब पढ़े होंगे. But just we need the basic meaning of factorial to understand the theorem. Now if you notice one thing, if I'm saying n factorial is the product of first n natural numbers, 6 factorial is the product of first 6 natural numbers, 1 से लेके 6 तक. So that means मैं 1 से लेके 5 तक अगर लेता हूँ, I can call this as 5 factorial. Similarly, suppose I'll write it till 7. Sorry, ये 9 तक लिख लिया मैं, my mistake. So let me change it to 9 factorial. 1 से लेके 9 तक लिखा हूँ. So 6 factorial I can write it as 6 into 5 factorial. 9 factorial I can write it as 9 into 8 into 7 factorial. This is how it works. So in general, you can write it as a note here. In general, we can write n factorial. We can expand it as n into n minus 1 factorial. Also, we can write it as n into n minus 1 into n minus 2 factorial and so on. We can do this. Okay. This is the overall meaning of factorial. And for our understanding factorial के few values you need to know. क्या क्या values? जैसे 0 factorial is 1, 1 factorial is also 1, 2 factorial is 1 into 2, so 2, 3 factorial 1 into 2 into 3, 6, 4 factorial is 24, 5 factorial is 120, 6 factorial is 720, 7 factorial is 5040, and 8 factorial is 40320. If you know the values till 8 factorial, then it is better for calculation purposes. तो convenient होता है थोड़ा calculation. Beyond 8 factorial, you can compute उसी instance पे. No need to mug up the values. Nothing maths में एक भी चीज याद नहीं रखना है. You have to understand. Okay, nothing to remember. Even the theorems, try and understand how it works. So this is the overall context of factorials. Now, what is Wilson's theorem? तो विल्सन्स थ्योरम का स्टेटमेंट अगर देखेंगे, थ्योरम क्या है? फॉर एनी प्राइम नंबर p, for any prime number p, remainder of p minus 1 factorial divided by p is equal to p minus 1. This is the statement. For any prime number p, remainder of p minus 1 factorial divided by p is p minus 1. So for an example, I can write remainder of, let us say, 12 factorial divided by 13. It is 12. Similarly, I can write remainder of, let us say, 22 factorial divided by 23. This is 22. काफी direct and simple theorem. Okay, this is basically, let us call it a statement 1 of Wilson's theorem. तो Wilson's theorem statement तो एक ही है, but questions इतना भी direct नहीं आएगा, तो थोड़ा इसको वो twist करके तुम्हें पूछेंगे. कैसे twist करके पूछेंगे? For an example, we know suppose 22 factorial divided by 23, remainder is 22. Question will ask like this: find the remainder when 21 factorial is divided by 23. ये कितना होगा? Suppose. I'll generalize these answers also, but let us say you don't know the theorem. कैसे solve करोगे? Again, we'll go back to the first session, basic remainder theorem. I said it in the beginning. That's the parent theorem, and if you understand that, you will understand the functionality of remainders, how the principle of remainders works. Every question you will find it convenient if you have understood the basic remainder theorem. तो देखते हैं कैसे यूज होता है. So let us see आंसर कैसे होगा. Now we know remainder of 22 factorial divided by 23 is 22 as per this theorem.
22 factorial को I'll split it in this way. It is 22 into 21 factorial divided by 23. This is equal to 22. So you can break it in this way. 22 divided by 23 into remainder of 21 factorial divided by 23. Yes or no? Which principle? Now remainder of a product is product of remainders. So I use that principle. So 22 into remainder of 21 factorial divided by 23 is 22. So 22 gets cancelled out. So finally you get remainder of 21 factorial divided by 23 is 1. We can generalize that is that as, it as a theorem also, like an extension of Wilson's theorem. Parent statement तो यही है. But from this how did I derive? मुझे अगर p minus 1 पता है तो अभी मैं p minus 2 निकाल सकता हूँ. Because 22 factorial if I know, 21 factorial I can calculate. Same logic में मैं 20 factorial तक भी पहुंच सकता हूँ. कैसे? For an example, let us take another question and then I'll come to the generalization यहाँ पे. ठीक है? Let us take another question. Suppose question is given in this way. Find the remainder when, let us say, I'll say 14 factorial is divided by 17. 14 factorial is divided by 17. कैसे solve करेंगे इसको? So first we'll start with this. We know using Wilson's theorem 16 factorial divided by 17 remainder is 16. तो तुम 16 factorial को ऐसा break करोगे 16 into 15 factorial divided by 17. This is 16. So here the remainder is, when you do this, 16 divided by 17 remainder is 16 and यहाँ पे ये तुम्हारा निकालना है remainder कितना है. तो जैसे ये previous example break किए थे, we'll break it in this way. It is 16 into remainder of 15 factorial divided by 17. This is 16, तो ये cancel हो गया. Now remainder of 15 factorial divided by 17 आ गया 1. Let me write here, ये confusion होगा, इसको यहाँ पे लिखते हैं. फिर उसी प्रोसेस में 15 से 14 जाएंगे. आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी द आंसर ना, कि कैसे होने जा रहा है आगे जाके. Sorry. Yeah. Now 15 factorial, I'll split it in this way. It is 15 into 14 factorial divided by 17. This is equal to 1. Now again, this is remainder of 15 divided by 17 into remainder of 14 factorial divided by 17. Now 15 divided by 17 remainder is 15 and remainder of 14 factorial divided by 17. तो इतना आंसर आ गया. मुझे ये निकालना है, ये व्हाट इज दिस. I'll say, let us say this is x. तो बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा कर लेंगे कि 15x is 1, तो x is like 1 by 15. This is wrong. We cannot do this. मतलब 1 by 15 रिमाइंडर कैसे हो सकता है? ये भी नेचुरल नंबर, वो भी नेचुरल नंबर, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी अ नेचुरल नंबर. 1 by 15 तो नहीं हो सकता. मीनिंग क्या है स्टेटमेंट का? यहाँ पे जो आंसर आया ये तो लॉजिकली इट्स नॉट रॉन्ग. द मीनिंग इज, अगर मान लो ये x है तो 15x डिवाइडेड बाय 17 रिमाइंडर इज 1. मतलब x का कुछ एक वैल्यू आएगा, उसको जब तुम 15 में मल्टीप्लाई करोगे इट विल गिव यू अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 17. तो फिर क्या करना है? वापस से डिवाइड करते हैं हम, तो उसके बाद जाके रिमाइंडर 1 आएगा. तो फ्रॉम देयर यू विल फिगर आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. These questions will be very easy once I give you the generalization. 5 seconds. Any question on Wilson's 5 seconds में solve करोगे, don't worry. But I am explaining you how the principle works, derivation of these जो generalizations. तो एक बार derivation समझ गए, बार बार you don't have to derive. And books में usually p-1, p-2 तक देता है. मैं तुमको p-3, p-4 तक का भी रिजल्ट बता के दूंगा.
So you don't have to solve anything. Just put the formula, get the answer in case of Wilson. That will be a situation like that. But abhi let us figure out what can be the value of x such that 15x when divided by 17 remainder will be 1. तो ऐसा एक मल्टीपल ऑफ 15 देखना है जो 17 का मल्टीपल से 1 मोर होगा. तो तुम क्या करो, 15 के मल्टीपल्स में ऑपरेट करो. ठीक है. x इक्वल टू 1 अगर लेते हैं 15 आता है, नॉट पॉसिबल. x इक्वल टू 2 लोगे तो x क्या क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता. x इक्वल टू 2 लोगे, नहीं हो सकता. x इक्वल टू 3 अगेन नहीं हो रहा है. x इक्वल टू 4 60 डिवाइडेड बाय 17 रिमाइंडर इज नॉट 1. x इक्वल टू 5 75 डिवाइडेड बाय 17 नहीं हो रहा है. x इक्वल टू 6 90 डिवाइडेड बाय 17 रिमाइंडर 5 आ रहा है. x इक्वल टू 7 105 डिवाइडेड बाय 17 रिमाइंडर 3. x इज इक्वल टू 8. x इज इक्वल टू 8 में 15 इंटू 8 इज 120 and this 120 divided by 17 7 is 119 so remainder is 1. Hence my answer is x is equal to 8. ऐसे आ रहा है. समझ रहे हो how the principle works? 14 factorial divided by 17. Okay, so quite easy this thing is. How do you solve this? ये विल्सन थ्योरम का फैक्टोरियल का डेफिनेशन रहा. And then this is for any prime number p minus 1 factorial divided by p is p minus 1. This is the original and like the important statement of Wilson. उससे हम फिर derive करेंगे एक एक next step. So these are the generalizations. ये statement 1 है तुम्हारा, p minus 1 factorial divided by p is p minus 1. तो example यहाँ पे जो 12 factorial divided by 13. So remainder is 12, 13 minus 1. p minus 2 factorial जब लोगे, सपोज मैं वही यहाँ पे करूंगा, रिमाइंडर ऑफ, मैं अगर 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 किया तो डायरेक्टली यू कैन से द रिमाइंडर इज 1 ऑलवेज. दो केसेस में अपना 1 आया. ये वाला एग्जांपल 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 एंड ये 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 23. जब p माइनस 2 होता है तो देखो 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे भी 1 आ रहा है. 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7. तो p माइनस 2 फैक्टोरियल जब होगा रिमाइंडर इज 1. जब p माइनस 3 फैक्टोरियल होगा, जैसे अभी ये क्वेश्चन कर रहे थे 21 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17, सपोज ये जो क्वेश्चन कर रहे थे, हम तो सॉल्व करके आंसर निकाल लिए, बट हाउ डू यूज द फॉर्मूला ना. 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 तुम डायरेक्ट ये कर सकते हो p माइनस 1 बाय 2, p माइनस 1 बाय 2, 17 माइनस 1 बाय 2 विल गेट द आंसर 8. अपना 8 आया था अभी. जस्ट यू हैव टू पुट द फॉर्मूला. बुक्स में यूजुअली 1 2 तक देता है एंड पूछता है 3 4 का सॉल्व करने, तो वहां पे यू सॉल्व बाय द प्रोसेस वी जस्ट नाउ यूज्ड. देन आता है p माइनस 4 फैक्टोरियल. अब p माइनस 4 फैक्टोरियल हैज गॉट टू रिजल्ट. या तो वो 1 प्लस p बाय 2 हो सकता है, या तो 1 माइनस p बाय 2 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन p का नेचर क्या है. इफ p 6 के माइनस 1 देन इट बिकम्स 1 प्लस p बाय 2 एंड इफ p 6 के प्लस 1 इट बिकम्स 1 माइनस p बाय 2. क्या मतलब है इसका? लेट अस सी दिस. What happens is when we are talking about any prime number, so if p is a prime number, any prime number can be of the form 6k plus minus 1. तुम कोई भी prime number लो except 2 and 3. Prime numbers are of the form 6k plus minus 1. जैसे यहाँ पे मैं लिख लाता हूँ, if I am writing 5 it is 6 into 1 minus 1. I am writing 7 it is 6 into 1 plus 1. Suppose I'll write 31, it is 6 into 5 plus 1. I'll write 41, it is 6 into 7 minus 1. या तो 6k plus 1 or 6k minus 1, always, every prime number. But vice versa isn't true. What do you mean by vice versa isn't true? Prime number 6k plus minus 1 में होगा. अब 6k plus minus 1 is not necessarily prime. For example 25, this is not prime, but 25 is in the form 6 into 4 plus 1. तो हालांकि वो 6k plus 1 में है, नेसेसरी नहीं है प्राइम है. अगर प्राइम है तो 6k plus minus 1 होगा. 6k plus minus 1 है, that doesn't mean it is necessarily prime. It can be prime, cannot be prime also. But anyways,
विल्सन का जो फोर्थ स्टेटमेंट, सपोज आई विल से फाइंड द एग्जांपल ऑफ 27 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 31. The moment you see this, it is of the form p minus 4 factorial divided by p. तो पहले तुम p का नेचर यहाँ पे देखो, p is equal to 31, it is like 6 into 5 plus 1. That means p is of the form 6k plus 1. Hence the remainder is equal to 1 minus p by 6. So 1 minus 31 by 6. So minus 30 by 6 minus 5. Minus 5 is the negative remainder. How do you make it positive? Now you add the divisor. So answer is 26. Negative remainder ka principle, to make a negative remainder positive, I am writing it again. To make a negative remainder positive, add the divisor. Keep adding the divisor जब तक पॉजिटिव नहीं होता. समझ रहे हो हाउ इट वर्क्स? तो आराम से तुम p minus 4 तक, which may be the toughest question of Wilson, you just need to put the formula. जैसे यहाँ पे 27 factorial divided by 31, so 1 minus 31 by 6, so minus 5 or 26. And if you have to solve this, suppose I'll say इसका सॉल्व करेंगे, ये तो इसका एग्जांपल हो गया. सपोज ऐसे एग्जांपल एक है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ लेट अस से 39 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 39 बोला 37 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 41. इस टाइप के मॉक क्वेश्चंस भी आते हैं. 37 फैक्टोरियल, p माइनस 4 होना चाहिए 41. अभी 41 इज 6 इंटू 7 माइनस 1, तो द रिमाइंडर इज 1 प्लस p by 6. 1 plus p by 6. Direct, just put the formula, get the answer. Simple question. So 1 plus 41 by 6, 42 by 6, remainder is 7. So this is the entire summary of Wilson's theorem. 4 possible results. आराम से सारा क्वेश्चन विल्सन का तुम सॉल्व कर सकते हो. ठीक है? Hope this is clear to everyone. Let us see some questions. But before that, one important thing, दैट हम यहाँ पे बोलते जा रहे हैं प्राइम 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 नंबर होना चाहिए, बट पता कैसे लगेगा वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट? हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज है. प्रॉपर्टी 1, प्राइम नंबर p is only divisible by 1 and itself. That is, it has exactly 2 factors. कोई भी प्राइम नंबर का exactly 2 factors होता है and it is divisible by 1 and itself. But that is not sufficient. वो तो छोटे नंबर्स के लिए चलो ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज अभी जो डिस्कस किए, that any prime number p is of the form 6k plus minus 1 except 2 and 3. But again, vice versa isn't true. So this is not like a guaranteed criteria. अब 6k plus minus 1 हो गया, that doesn't mean प्राइम है. अगर प्राइम पता है तो जाके बोल सकते हैं 6k plus minus 1. बट अगर पता लगाना है कि प्राइम है कि नहीं, तो मे बी दिस इज नॉट ऑलवेज इनफ. तो द थर्ड प्रॉपर्टी तो एग्जैक्टली बोल नहीं सकते, इट्स लाइक अ टेस्टिंग मैकेनिज्म. सर कभी भी कोई नंबर दिया जाएगा, मान लो मैं तुमको बोला नंबर इज 197. हाउ टू चेक वेदर दिस इज अ प्राइम और नॉट? बेसिक प्रिंसिपल क्या है? अगर तुम्हें ऐसा कोई नंबर मिल गया दैट कैन डिवाइड 197, सपोज 197 इज डिविजिबल बाय दैट नंबर, तो फिर तो प्राइम रहा नहीं. एंड इफ इट इज नॉट डिविजिबल तो प्राइम हो गया. अब हम यूजुअली कैसे सॉल्व करते हैं? हम 2 से 3 से 5 7 9 ऐसा करके चेक करेंगे, किससे अगर डिविजिबल हो जाता है तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर. If it is not divisible, then it is a prime number. So which number should you try? Will I keep randomly trying all possible numbers? No. What you need to do is, कोई भी नंबर दिया जाएगा, you take its approximate square root. So root over of n 197, approximate square root ले लो 14. 196 का square root is 14, 14 point something, 14 ले लो. And check
with all primes less than 14. बस इतना तुम्हें करना है. That means I'll check with 2, 3, 5, 7, 11 and 13. अगर इन्हीं 6 में से किसी से डिविजिबल हो जाता है तो नॉट प्राइम, अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली प्राइम. आई डोंट नीड टू ट्राई एंड डिवाइडेड बाय 17, 19, 23. वो सारे नंबर्स ट्राई करना ही नहीं. तो जो भी नंबर दिया जाएगा जस्ट अप्रोक्सीमेटली टेक इट स्क्वायर रूट. ट्राई विथ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन द स्क्वायर रूट. So it will like ease out the calculation a little bit. तो 197 2 से तो नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो, डेफिनेटली नॉट 5, 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है एंड 13 से भी नहीं है. Hence 197 is the prime number. Very simple. तुम्हें रैंडमली कोई नंबर्स ट्राई ना करके यू फॉलो अ प्रिंसिपल दैट यू टेक द स्क्वायर रूट एंड देन डिवाइड विथ ऑल प्राइम नंबर्स लेसर देन द स्क्वायर रूट. That will help you calculate the answers very easily. Okay, this is how you check whether a number is prime or not. Now let us come to the questions. तो और एक एग्जांपल भी ले सकते हैं. Suppose let me take another example. Suppose I'll take n as 227. तो approximate square root of n, square root of 227, 15 point something, तो मैंने ले लिया 15. तो कौन से प्राइम्स के साथ चेक करोगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13. So 227 is not divisible by 2. It is not divisible by 3. Not divisible by 5. It's not divisible by 7 also, I think. 7, हाँ 7 से भी नहीं. 11 से भी नहीं हो रहा है. 13 से भी नहीं हो रहा है. Hence 227 is a prime number. Okay. तो तुम्हारा बेसिक प्रायोरिटीज while you study numbers, कुछ चीजें जो बेसिक है, that is 1 से लेके 30 का you should know the squares so that तुम्हें squaring and square root easy लगे. 1 से लेके 20 you should know the cubes. I'll take a session on this speed maths का, don't worry. And similarly square roots कैसे निकालते हैं and cube roots कैसे निकालते हैं, you should know about this also. And till the 4th power of all digits, जैसे 9 to the power 4 कितना है, 7 to the power 4 कितना है, 5 to the power 4 कितना है, 6 to the power 4 कितना है, 8 to the power 4 कितना है, 4th power एटलीस्ट सारे डिजिट्स को पता रहने चाहिए. So these are some basic things that will help you get started and you won't find that much trouble in your calculation. Alright, let's come to the questions. कुछ एक example solve करते हैं. Here it is given 52 factorial and 18 to the power 105 divided by 53. So this is, I'll break it, 52 factorial divided by 53 and this is 18 to the power 105 divided by 53. Now here the remainder is 52, Wilson's theorem use करके, and here I will apply Fermat's theorem. So this is now 52 and this becomes 18 to the power 52 into 18 to the power 52 into 18 divided by 53. Now look at this. The remainder when 18 to the power 52 is divided by 53 is 1. Using Fermat's theorem, a to the power p minus 1 divided by p, the remainder is 1. And here the remainder is 18. So finally तुम्हारा आ गया यहाँ पे remainder 52 into 18. But 52 into 18 again is a huge number. तो फिर से 53 में डिवाइड करेंगे. When you divide it by 53, no need to multiply. तुम देखो यहाँ पे रिमाइंडर -1 है एंड यहाँ पे 18 है. So that is how negative remainders will help you calculate. तो ओवरऑल रिमाइंडर आ रहा है -18. How do you make it positive? -18 में 53 ऐड कर लो, so you get 35. To make a negative remainder positive, keep adding the divisor. तो I avoided 52 into 18 मल्टीप्लाई करके वापस 53 में भी डिवाइड कर सकते हो, बट क्यों करना है? इजी है टू डू दिस. नेगेटिव रिमाइंडर्स, तो नेगेटिव रिमाइंडर्स का पर्पस ही वही है, लाइक इट हेल्प्स यू कैलकुलेट.
मेक्स योर कैलकुलेशन कन्वीनियंट, थोड़ा इजी कर देता है. नॉट द स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव रिमाइंडर्स. व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट वीडियो. डू चेक इट आउट. ठीक है, वॉच ऑल द वीडियोस फ्रॉम द बिगिनिंग. जो भी इसको आधे में देख रहे होगे, प्लीज वॉच इट फ्रॉम द बिगिनिंग. यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट, रिमाइंडर्स का. आई हैव ग्रेजुअली लाइक गॉन वन स्टेप एट अ टाइम. तो पहले से देखोगे पूरा ये टॉपिक तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर होगा ही होगा. ठीक है, लेट अस चेक दिस वन. सीधे सीधे क्वेश्चन है. 225 फैक्टोरियल इंटू 224 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 227. जस्ट नाउ वी चेक्ड 227 इज अ प्राइम नंबर. अभी कुछ स्लाइड्स पहले चेक किए थे. तो आई कैन अप्लाई विल्सन्स. तो पहले इनको ब्रेक कर देते हैं. 220 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 227 into 224 factorial divided by 227. So this is p minus 2, so remainder is 1, and this is p minus 3, so remainder is 227 minus 1 by 2. So 226, so 113. सीधा दो प्रिंसिपल यूज हुआ विल्सन्स का. रिमाइंडर ऑफ p minus 1 factorial divided by p is p minus 1, and remainder of p minus 2 factorial divided by p is 1. ठीक है, all right, hope this is making sense and I'm not going too fast. दो पार्ट में ब्रेक कर लिया. रिमाइंडर ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रिमाइंडर्स एंड देन विल्सन अप्लाई कर लिया. लेट अस सी दिस वन. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. इसको जाने से पहले लेट मी एक्सप्लेन यू अनदर प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड एज रूल ऑफ कॉमन फैक्टर्स. रूल काफी सिंपल है बट वेरी फंडामेंटल. सपोज मैं बोलूंगा रिमाइंडर ऑफ 24 डिवाइडेड बाय 10. रिमाइंडर तो आता है 4, बट सपोज कोई ऐसा करता है 24 को 10 से तो डिवाइड करना है. तो पहले ऐसा 2 में कैंसिल कर लेगा, ये 12 ये 5. तो फिर लिख लेगा इट इज रिमाइंडर ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 5 एंड इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू 2. ये तो गलत हो गया ना. बहुत लोग ऐसे समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं. दिस इज रॉन्ग. क्या गलत हुआ इसमें? तुम जो 2 कैंसिल कर लिए, कैसे कैंसिल कर लेते हो? यू कैन नॉट कैंसिल इट दैट वे. ऑल्दो दे हैव समथिंग इन कॉमन, बट ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते. तो फिर दो अलग अलग डिवीजन हो गया. 24 को 10 से डिवाइड करना एंड 12 को 5 से डिवाइड करना, एकदम अलग होता है. जब क्वेश्चन निकालते हैं तब कैंसिल कर सकते हैं, बट रिमाइंडर जब निकालते हो यू कैन नॉट कैंसिल. तो ये थोड़ा फंडामेंटल एरर रह जाता है समटाइम्स एंड इट नीड्स टू बी सेड. अगर नहीं बोलेंगे तो कुछ लोगों का वो रह जाएगा. तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग क्वोशिएंट ऑफ डिवीजन करते हैं तो दो रिजल्ट होता है, एक क्वोशिएंट एक रिमाइंडर. व्हाइल कैलकुलेटिंग क्वोशिएंट यू कैन कैंसिल आउट, और जब रिमाइंडर्स कैलकुलेट करते हो यू कैन नॉट कैंसिल आउट. तो क्या करना है बेसिकली? मल्टीप्लाई बैक द कॉमन फैक्टर कैंसल्ड. जो भी तुम कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट किए थे उसको वापस से मल्टीप्लाई करना है. तो ये 2 में मैंने क्या कैंसिल किया था? 2, तो वापस 2 इंटू 2 करके 4 करना है. दिस इज द प्रिंसिपल. तो उसको अगर मैं रूल में पुट करूं तो बेसिकली इट सेज दैट रिमाइंडर ऑफ k इंटू a डिवाइडेड बाय k इंटू b. तो k यहाँ पे कॉमन फैक्टर रह गया बोथ डिविडेंड एंड डिवाइजर में. तो इट इज k होल इंटू रिमाइंडर ऑफ a डिवाइडेड बाय b. So wherever you see there is a common factor between dividend and divisor, you can take out that common factor and then put the theorem. Just take it out like this way. K को बाहर ले आओ, then divide करो, फिर multiply हो जाएगा. So if I do it in this question, it is saying find the remainder of 68 factorial divided by 67 square. तो यहाँ पे देखो 68 factorial I can write it as 68 into 67 into 66 factorial. 67 square I can write it as 67 into 67. So यहाँ पे देखो 67 is the common factor, so you can take it out and this becomes remainder of 68 into 66 factorial divided by
67. Now the remainder here is 1. 68 divided by 67, remainder is 1. And 66 factorial divided by 67, remainder is 66. Overall I'll get 67 into 66. Now यहाँ पे फिर से डिवाइड करना है नहीं, वो चेक कर लेते हैं. What is our divisor? 67 square is the divisor. वैल्यू बाई 67 स्क्वायर कितना आ जाता है? आई थिंक 4489 आ जाएगा. एंड देन तुम्हें 67 इंटू 66 करना है. तो दिस इज लेस देन 67 स्क्वायर ऑफ कोर्स. तो वापस से और डिवाइड नहीं करना है, तुम्हें बस 67 इंटू 66 कर लेना है एंड यू विल गेट योर आंसर. अगर वो एक्सीड करता है डिवाइजर को, देन यू वुड हैव लाइक अगेन डिवाइडेड. बट यहाँ पे एक्सीड तो कर नहीं रहा है, तो 67 इंटू 66 4422 आ रहा है, विच इज लेस देन 4489. So that is why this is our answer. But the principle, the multiply वगैरह तो कर लोगे, that is not an issue. Understand the principle. If there is a common factor, you take out the common factor and then find the remainder. That is how it works. All right. So this was it, all about Wilson's theorem. I hope all of you enjoyed the session. If you have watched it so far, do subscribe to the Aptitude Club channel and like the video. Share it with your friends who are also preparing for CAT and other tests, competitive exams के लिए. I hope this video will give you some idea and help you on your journey on quants. Okay, please watch the previous sessions if you haven't, to understand the entire remainders portion. Remainders का और 3-4 सेशन होगा ये सीरीज में, and entirely remainders will be covered. You don't have to watch anything extra, no need to solve anything extra. बस ये वीडियो end to end देख लो ये सीरीज. You will never have any single doubt on remainders ever again. That I can assure you. So thanks a lot again for watching and visiting my channel. Do subscribe and we'll meet again in yet another video. Till then, thank you all. Bye bye.